हेलो एवरीवन, पिछले सेशन में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था। इस बार हम लोग देख रहे हैं इंसोलेशन, हीट बजट और एल्बिडो। ठीक है, तो चलो इंसोलेशन से स्टार्ट करते हैं। इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन इज़ नथिंग बट इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ओके, हम कितना एनर्जी रिसीव कर रहे हैं? वी रिसीव 2 पार्ट्स आउट ऑफ 1 बिलियन पार्ट। ओके, सो क्या कितना एस्टिमेट किया गया है? इट इज़ दिस 1.92 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसका क्या मतलब होता है? इफ़ वी टेक अ स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, ओके, एंड अलाउ द एनर्जी टू ड्रॉप for 1 minute, okay, the amount of energy accumulated will be equal to 1.92 calorie. This is what this means. This is also known as solar constant. Okay, this can be expressed in many forms. You can express in kilowatt hour, you can also express in terms of Langley, okay, depending upon your use case. Okay, so let's move forward. Okay, तो हम लोग देखते हैं इंसोलेशन के बारे में। प्रॉपर्टी वी नो दैट इट इज़ ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, तो बिकॉज इट इज़ हैविंग हाई एनर्जी, सो इट इज़ हैविंग वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ इज़ वेरी लेस, that is why it is able to travel this far from sun to earth. Okay, terrestrial radiation is of longer. Terrestrial radiation we will come back later. I think I have told you before what is terrestrial radiation. If this is sun and energy is reaching to earth पे पहुंचा in lower very high frequency पे. Okay, so what earth will do, earth will take this energy and re-emit this in longer wavelength. Okay, longer wavelength has less energy, means low frequency means less energy is there. Okay, this re-emitted radiation is known as terrestrial radiation. We will look into this terrestrial radiation. Okay, so okay, now we have seen normal lab set with height, how the temperature decreases at the rate of 6.5 degree centigrade per kilometer or 1 degree centigrade per 165 meter. Okay, this is what we have read. Okay, so no need to discuss that again and again. So let's move on to another topic, which is method of heat transfer. What is heat transfer? How does heat transfer from one region to another? Okay, there are 4 methods mainly. Okay, one is radiation. Radiation is nothing but electromagnetic radiation is one form of radiation where it doesn't require any medium to travel. Okay, so every body hot or cold, ठीक है, वो रेडिएशन एमिट करता है. हॉटर बॉडी होगी और एक कोल्ड बॉडी होगी. हॉटर बॉडी में आपका टेम्परेचर थोड़ा कम है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, राइट? तो वो जो रेडिएशन एमिट करेगी ना, इट विल बी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी. ओके, और वहीं कोल्ड बॉडी, उसमें टेम्परेचर उसका कम है, मतलब हीट उसमें कम है, तो उसमें जो रेडिएशन एमिट होगी ना, वो लॉन्गर वेवलेंथ की होगी. ये समझना था, ठीक है? तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, उसी को कहते हैं रेडिएशन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू कंडक्शन. कंडक्शन क्या होता है? ये होता है जैसे एक बॉडी ले लूँ मैं और उसको हीट करूँ, ठीक है? तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट एट द जोन ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, zone of contact, this is the zone of contact and heat is getting transferred from this place to other parts. Okay, this is called conduction. Convection is when we supply heat to a body, it expands and it causes a vertical movement of that. Suppose this is ground. Okay, at the zone of contact there will be some air. Okay, so this is nothing but conduction. The heat will be transferred from ground to the air column. Okay, but as this gain energy, it will now gain the energy and it will expand like this, expand. So what we see, there is a vertical movement of air. Okay, so this is nothing but convection. Okay, and advection is just the opposite of convection. Here in convection we saw that it is moving in upward vertical direction. Okay, in advection what happens? It travels in horizontal direction. Okay, so for example of this is movement of a local wind called Lu in northern India. You must have heard. Okay, northern India. This was all about the
methods of heat transfer. Now let's move to factors affecting insolation. We know what is insolation. It is incoming solar radiation. Okay, on what factor does this depend? Okay, so the first thing is latitude. How this depend latitude? Suppose this is sun, this is earth. Okay, this is equator, this is 60 degree north latitude, this is 90 degree north latitude. Okay, now see, the sun light is falling directly at the equator. At the tropics the sun ray is falling directly. Okay, so क्या मतलब हुआ इसका? तो जो सन रे फॉल कर रही है ना, सपोज इट इज़ वर्टिकली फॉलिंग. ओके, सो इट इज़ टेकिंग लोअर एरिया, लेस एरिया इट इज़ टेकिंग, less area is taking. That means more heat in less area. That means more intensity. Okay, now compare with the higher latitude. Suppose it is falling at 60 degree. Suppose it is falling at, so here the rays are falling at an oblique angle. Since it is falling at an oblique angle, इसका क्या मतलब होता है कि जब रे गिर रही है, this is the surface and ray falling like this, so energy is distributed at much larger area. Okay, compared to this is a much larger area. Okay, so energy in larger area, less intensity. Okay, I think you got it what I meant to say. Now length of the day. Now let's see the second factor, length of the day. Area having more sunlight, because of having more hours of daylight. Okay, suppose it is at suppose somewhere at equator we are having 12 hours of sunlight, at somewhere also suppose we have 14 hours of sunlight. Okay, it is like summer season going on in northern hemisphere. Okay, so it is having 14 hours, so it will receive more insolation obviously. Okay, more 12 hours is there at the equator. The higher latitudes they are receiving 2 hours of extra sunlight. ठीक है, तो 2 घंटे ज़्यादा सनलाइट मिला. ठीक है, तो ज़्यादा इंसुलेशन मिला. ओके, थर्ड थिंग, एट ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर. ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर का क्या मतलब होता है? देखो, हमारा जो स्काई है, द स्काई दैट वी आर हैविंग, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली clear. It is having clouds, it is having dust particles, it is having soot. Okay, so an area, इक्वेटर है. ठीक है, इक्वेटर पे एक है और एक सब ट्रॉपिकल एरिया, टेम्परेट एरिया, फिर सब ट्रॉपिकल एरिया ले लो. ठीक है, इक्वेटर पे 0 डिग्री पे गिर रहा है. ठीक है, इंसुलेशन गिर रहा है, पर यहाँ पे क्लाउड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत ज़्यादा है, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा है. क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होने के वजह से जो सनलाइट रे आती है ना, वो क्लाउड से ही बाउंस बैक कर देती है आउटर स्पेस में. ठीक है, तो इंसुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है कंपेयर टू सब ट्रॉपिक. यहाँ पे थोड़े क्लाउड कवर कम होते हैं, तो मैक्सिमम इंसुलेशन दे आर अलोंग द सब ट्रॉपिक्स. दिस इज़ वन फैक्ट यू शुड नो. ओके, बिकॉज सब ट्रॉपिक्स हैव लेस क्लाउड कवर कंपेयर टू इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर पे इवापोरेशन ज़्यादा है, इवापोरेशन ज़्यादा है तो क्लाउड कवर ज़्यादा है, क्लाउड कवर ज़्यादा है तो रिफ्लेक्शन ऑफ जो सन का रे है वो ज़्यादा है. ओके, तो इसमें हमने क्या देखा, इंसुलेशन के बारे में समझ लिया कि इंसुलेशन क्या होता है, हाउ मच ऑफ इंसुलेशन डू वी रिसीव. ओके, ऑन एन एवरेज. ठीक है, इंसुलेशन की नेचर क्या है, इट इज़ ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ. टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, उसका क्यों लॉन्गर वेवलेंथ होता है. ठीक है, नॉर्मल लैब सेट का एक बार फिर से हम लोगों ने ब्रीफ में देखा. हीट ट्रांसफ़र के मेथड्स क्या होते हैं, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन. रेडिएशन रेडिएंट एनर्जी से हुआ, कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है इसका. कंडक्शन एट द जोन ऑफ कॉन्टैक्ट हीट ट्रांसफ़र होता है. कन्वेक्शन जिसमें वर्टिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ जो एयर है उसका देखा. एडवेक्शन है जो कन्वेक्शन का ऑपोजिट, जिसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. एग्जांपल हमने देखा लू इन नदर्न इंडिया. ओके, फिर हमने देखा फैक्टर्स. ठीक है, कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंसुलेशन को. इसमें पहला लैटिट्यूड देखा, कैसे डायरेक्ट सनलाइट मिलती है और एक ऑब्लिक एंगल पे सनलाइट मिलती है, तो क्या डिफरेंसेस होते हैं. लेंथ ऑफ द डे देखा, लेंथ ऑफ द डे में जिसमें ज़्यादा डे लाइट मिलेगा आपको, 12 से या फिर 15 आवर हो गया तो 15 आवर्स को ज़्यादा डे लाइट मिला, मतलब उसमें इंसुलेशन ज़्यादा है. ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर देखा, अगर क्लाउड कवर है, ठीक है, तो इंसुलेशन रिड्यूस हो जाता है. इसलिए सब ट्रॉपिक्स पे वी आर हैविंग मोर इंसुलेशन कंपेयर टू इक्वेटर. ओके, सो दिस वॉज फ्रॉम दिस
session. Okay, thank you.